Welcome in the forum of BHU. Thank you. How are you? I'm good, absolutely fine. Good, good, good. बहुत अच्छा लगा कि आप हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को सेशन शुरू कर देना चाहिए। Sure. और जैसा कि हम सबको पता है, आज वी आर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, न्यू दिल्ली। And this is the Q3 chapter of this council forum. For today live session, we have with respected Sri Sanjay Inisetti, and we are talking about today angel investment, VC funding, venture capital funding, opportunities for early stage entrepreneurship. मैं बहुत सारे बच्चों को ये बताना और समझाना चाहता हूँ कि आज हम लोग बात करेंगे कि जब हम कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने जाते हैं और या नया एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करने जाते हैं तो किस तरीके से हमको फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे पास कैसे आती हैं और हम लोग किस किस तरफ से आएंगे। तो इसी के सिलसिले में आज हमारे पास श्री संजय इनिसेट्टी जी हैं, जो कि 50K वेंचर्स के मेंबर्स हैं, ओनर हैं। मैं संजय जी से निवेदन करूंगा कि संजय जी थोड़ा सा अपने कंपनी के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें और उसके बाद आप अपनी बात को आज के टॉपिक के नजरिए में कहें। लैंग्वेज के लिए आप फ्री हैं, आप जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आपका स्वागत है काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिवार में। एक बार माइक, संजय जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी प्लीज। काफी दिन हो गया वेबिनार करके, सो आदत छूट गया। बढ़िया। So thank you, Dr. Manish ji. Happy to be here. Good afternoon to all the participants. Quick introduction about me. I'm Sanjay Nishati. I'm based in Hyderabad. So until last year, I was representing this fund called 50K Ventures, which is an 8 years old fund. Last year we exited because typically for any fund is in 6-7 years of cycle. I mean, 7 years you need to exit the fund. So we got an extension and we are done with the portfolio. And this year we set up a second fund called 99 SA Ventures. I'll talk a little more about that. थोड़ा मेरा जर्नी के बारे में बताना है तो 2009 में शुरुआत हुआ था वर्किंग विद स्टार्टअप्स, वॉलंटियरिंग विद स्टार्टअप्स। 2010 to 13 I worked with an angel network group started in Hyderabad, and that's where I got an opportunity to learn about entire angel investments, funding, startups, and everything. तब 2010 to 13 तक पूरा वहाँ पे करने के बाद 2014 में 50K वेंचर स्टार्ट कर दिया, मैं और दूसरा और एक इन्वेस्टर मिलके। वो यूएस से इंडिया आए थे तभी, तो दोनों साथ में मिलके 50K वेंचर स्टार्ट किए थे। 50K वेंचर्स में हमने आइडिया स्टेज पे भी इन्वेस्ट करे थे, अर्ली स्टेज पे करे थे, ग्रोथ स्टेज पे करे थे, इवन सीरीज से में भी को इन्वेस्टमेंट करे थे। तो पूरा लाइफ साइकिल में काफी एक्सपीरियंस था। 8 साल में ऑलमोस्ट क्लोज टू 40 इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं हम। every investment is a different use case and different learning. But last year we had 5 very good exits in 2020 and 21, and काफी कंपनीज भी वाइंड अप भी हो चुके हैं। ऐसा ही होता है क्योंकि स्टार्टअप जर्नी इज इटसेल्फ इज लाइक दैट, इट्स नॉट दैट इजी टू टेक इट टू फॉरवर्ड। तो आज मैं थोड़ा ये हाईलाइट करूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा। उससे पहले आई लाइक टू शेयर वन स्मॉल प्रेजेंटेशन, 10 minutes. Just give me a moment. My technical team, Ankit and Piyush, is here. If you need any type of support, then they will support you. Sure. I'm just opening a presentation and then I'll ask them.
मीनवेल किसको कोई क्वेश्चन है तो आपको मैसेज कर दीजिएगा, तब तक या ओके हो जाएगा, मैं आंसर पाऊँ। आई वांट टू पुट इट मोर इंटरैक्टिव। आप क्वेश्चन जो पूछे तो पार्टिसिपेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में इंटरेक्टिव भी रखिए, आपको जो समझ में नहीं आता उन बातों को भी पूछिए जरूर। Hopefully, Sanjay ji, you are not facing any problem to share. No, not at all, not at all. नहीं, एक दो प्रेजेंटेशंस थे, मैं एक निकाल रहा हूँ, कौन सा है। अब स्टार्टअप्स में कितने टेक स्टार्टअप्स है, कितने नॉन टेक है, जस्ट एज अ रेशियो, मनीष जी? यहाँ पर बीएचयू में हाँ हाँ। अभी तो इसका जैसे कोई ऐसा डाटा नहीं, लेकिन तब भी मान के चलिए कि टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप ज्यादा अभी आ रहे हैं, अटल इंक्यूबेशन सेंटर या इधर उधर, और नॉन टेक अच्छा वाले जो आते हैं वो आइडिया लेवल पे आते हैं बस। अच्छा। Hopefully one question asked by the one of the श्योर। participants, just say. हम्म। ग्लोबल लीडरशिप अपॉर्चुनिटी टू लेने थाईलैंड जाना। Yeah, maybe he or she have a Global Youth Leadership Award 2022. Hopefully this is some type of fake also. वो ऐसे Because भी है। ना ना ना, इन इंडिया होता क्या है कि अभी जैसे मुझे भी बहुत सारे रोज फोन और मेल आते रहते हैं कि मनीष जी आपको यंग टीचर और उदयमान टीचर का अवार्ड दिया जा रहा है, आप 20,000 रुपए दीजिए तो गोवा में आपको बहुत बड़ा प्राइज दिया जाएगा, ये मिनिस्टर आएंगे वो मिनिस्टर आएंगे। ऐसा पिछले 10 साल से कंटिन्यूअस मेरे साथ हो रहा है। तो जिसको अवार्ड देना होता है, जिसका काम अच्छा होता है, मेरी नॉलेज ये कहती है कि उसको आदमी खुद बुलाता है स्पॉन्सर करके। तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन होगा कि अगर वो अपनी डिटेल्स पूरी शेयर कर दें हमसे या संजय जी से, तो हम अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि इस तरीके के काम में क्या है और आपने क्या ऐसा काम किया है कि आपको जो यूथ लीडरशिप का अवार्ड दिया जा रहा है। ये सब बातों को भी देखना होता है थोड़ा। मनीष जी, मेरे को एक्सेस नहीं मिल रहा प्रेजेंटेशन शेयर करने के लिए। आई थिंक जस्ट टेक टीम शुड हेल्प मी। अंकित, यू आर हियर? यस सर, यस सर। सर को बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी सर को देते हैं सर, एक्सेस अभी दे रहे हैं, 1 मिनट। तुरंत दो। Sir, now you are a presenter. You can present your slide. नहीं, अभी भी सिस्टम प्रेफरेंस का कुछ बोल रहा है। ठीक है, मनीष जी, कहीं आपको या नहीं, मैं स्लाइड्स में एक ईमेल में शेयर कर दूंगा, आप चला दीजिए वो। ठीक है, प्लीज प्लीज आप चैट में दे दीजिए सर, हम चला देते हैं। हाँ, चैट में दे दीजिए शेयर लिंक। ठीक। Participant just wait for 2-3 minutes. Yeah. I mean, you can shoot some questions, what you want to ask me. Right? Yeah, please ask any question. संजय जी, इनके बिहाफ में मैं ही एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए जस्ट लाइक आइडिया, मैं भी एक नया काम बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो हमारे काम में क्या ऐसी खास बात होनी चाहिए कि आप पैसे लगाएंगे? ठीक है,
तो टिपिकली एनी इन्वेस्टर अगर एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है तो 5 चीज देखता है उसमें। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज what is that problem you're trying to solve, and what is that idea you have, and how pressing the problem is. ऐसा नहीं है कि वो सिंपल प्रॉब्लम हो, कि सिंपल प्रॉब्लम है तो लोग करें। फॉर एग्जांपल आज बनारस में पता नहीं लेकिन ऑल मेट्रोस में क्या हो रहा है, दे आर ट्राइंग टू डिलीवर ग्रोसरीज इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवरी हो रहा है, ये लेकिन वो तो किसको, ज्यादा लोग को फायदा ही नहीं है। हम्म, लोग उसको सीरियस प्रॉब्लम समझते नहीं है। इट्स yes, नॉट अ प्रेसिंग प्रॉब्लम, yes, राइट? तो इसलिए आइडिया शुड बी वेरी पोटेंशियल। हम्म, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द टीम। क्योंकि जब इन्वेस्टर को पूछे पैसे कहाँ पे डाल रहे हैं, हम बोलते हैं कि पैसे हम पीपल पे डाल रहे हैं। द पर्सन हु इज रनिंग द बिजनेस इज पुटिंग बेटिंग ऑन हिम, नॉट ऑन द बिजनेस, एंड द पर्सन विल बिल्ड द कंपनी। वैसा है। And third thing is that market opportunity. How big is the market you're going behind? Will next level investors also will come and invest in that or not? And fourth is your competitor analysis. कितने competitors से क्या क्या कंपनी से क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? Where are you standing in terms of them? वो analysis भी होना है। And other thing is your revenue model. काफी लोग get stuck at revenue model क्या लगाना है? Is it subscription model or is it freemium, premium क्या है? वो भी डिसाइड करना है। ये सब देखने के बाद एक एनालिसिस पे आते हैं कि ये मॉडल सही है कि नहीं, ये टीम सही है कि नहीं, इसमें मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, वो सब देखेंगे। ओके, now if presentation is ready, please start. या तो ये थोड़ा लर्निंग फ्रॉम माय स्टार्टअप जर्नी। कैसे बोला था कि आपको मैं 2009 से शुरू हुआ था मेरा जर्नी। काफी सालों से स्टार्टअप से ही काम कर रहा हूँ। अभी भी नया फंड में भी हम काफी स्टार्टअप के साथ ही क्लोज काम कर रहा हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ कि वाई स्टार्टअप्स फेल। क्योंकि वाई आई वांट टू स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट इज लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू डू मेनी थिंग्स इन स्टार्टअप एंड अल्टीमेटली मेजॉरिटी ऑफ देम फेल, not realizing the mistakes what others have done. That's why my presentation starts with why startups fail, then why startups succeed. If you understand why startups fail, then you can, that's how mitigate your overall failure rate or risk on the roadmap on your journey. So today, if you realize that we are in the era of startups, like सुबह उठने से शाम तक हम काफी apps यूज करते हैं, काफी applications भी यूज करते हो। सब एक टाइम पे स्टार्टअप्स थे, एक छोटे आइडियाज थे, कोई किसी ने बनाया, आज हम उसका कस्टमर्स होके उसका काफी बड़ी तरीके से यूज कर रहे हैं, अपना प्रॉब्लम, अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वैसे ही आप लोग भी आज जो आइडिया से आप एक प्रोडक्ट बनाया, नहीं तो एक सर्विस से, इवन इफ D2C ब्रांड, इट कुड बी फूड रहने दो, हेल्थ केयर रहने दीजिए, वो टेक्नोलॉजी रहने दीजिए, ई कॉमर्स भी रहने दीजिए, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम फॉर सम यूजर समवेयर। एंड टुडे द एक्सेप्टेंस इज वेरी हाई। 10 साल पहले देखे तो अगर स्टार्टअप का कोई सोल्यूशन रहे तो कोई उसका वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन आज देखो पूरा दुनिया व्हाट्सएप पे पड़ी है। व्हाट्सएप एक छोटा आइडिया था, इतना अडॉप्टेबिलिटी हो गया, आज सबके सब व्हाट्सएप के बगैर जीना मुश्किल हो गया। लॉट ऑफ कंपनीज डू मल्टीपल ग्रुप्स, कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे ही होता है ज्यादा। तो दैट्स व्हाट आई सेड, टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ स्टार्टअप्स। नेक्स्ट स्लाइड। एंड फर्स्ट प्लंज ऑफ एंटरप्रेन्योर, राइट? आप सब लोग ऐसे नहीं स्टार्ट करें कि सक्सेस होगा, फेलियर होगा, उतना सोचे नहीं। आपको अच्छा का आइडिया लगा, आपको कुछ करने का इरादा था, आपने एंटरप्रेन्योर बन के स्टार्ट कर दिए। तो वो बोलते हैं कि फर्स्ट प्लंज ऑफ एंटरप्रेन्योर लाइक जंप करते ऊपर से नीचे, जब नीचे पहुंचते ना तब तक पूरा बना देते, वेबसाइट बना देते, आइडिया बना देते, वैलिडेशन कर देते, कस्टमर्स को लेके आते। काफी काम तभी होता है जब ऊपर से नीचे आएंगे। दैट इज द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। प्लानिंग इज वेरी एड हॉक एंड ऑन द गो, राइट? एंड फेलियर इन पेनिलेस इज पार्ट ऑफ द जर्नी। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टअप कर दिया, आज नया कंपनी स्टार्ट कर दिया, आपको डे वन से पैसे मिलेंगे। बहुत रेयर में होता है। काफी लोगों को पूछे तो वो लोग बताएंगे कि फेलियर एंड बीइंग हैविंग नॉट इनफ मनी इज अ इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टार्टअप लाइफ। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो, अगर इफ यू आर मैरिड, लाइक समवन हैव टू हैव अ स्टेबल इनकम। इफ यू आर नॉट मैरिड, यू शुड प्लान हाउ यू विल हैव सेविंग्स, दैट पैसे नहीं आए तो भी आप चला पाएंगे। सो दिस इज द सेकंड बिग हर्डल इन ए स्टार्टअप। थर्ड, या नेक्स्ट। सो गोइंग एड विद द मार्केट लीडर्स। ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, राइट? आप जो प्रोडक्ट में, जो इंडस्ट्री में, जो डोमेन में है, ऑलरेडी कोई और बड़ा लेवल पे कर चुके हैं, कर रहे हैं, कोई और करके फेल हो गया है, कोई शुरू कर रहे, कोई हाफ में है। सो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं।
बट स्टिल आप कॉन्फिडेंस है कि मैं बना पाऊंगा, मैं भी कॉम्पिटिटर से भी करूंगा. काफी प्रेजेंटेशंस आते हैं मेरे को कॉम्पिटिटर एनालिसिस में. वो लगाता है कि मेरा कॉम्पिटिटर IBM, मेरा कॉम्पिटिटर गूगल, मेरा कॉम्पिटिटर अमेजोन है. वो लगाता है क्योंकि कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बना रहा हूँ वो नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए आपको प्रोडक्ट भी चलेगा. तो आप अकेले तो नहीं है मार्केट में, कोई ऑलरेडी बड़ा प्लेयर ऑलरेडी कर रहा है. नेक्स्ट. आपको पता है कि वेरी अनप्लान्ड जर्नी रहता है. इट विल बी फेलियर्स और मोर, यू विल नॉट गेट मनी फ्रॉम डे वन. देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी इन द मार्केट, आप अकेले नहीं है. इतने ऑब्स्टेकल से, इतने हर्डल से, फिर भी आपको एक मोटिवेशन रहता है ना कि लाइक मैं करूंगा. व्हाट इज द मोटिवेशन? सबका एक एक रहता है. नेक्स्ट स्लाइड. मोटिवेशन है कि आपका आइडिया को जो रियलिटी बनाना है ना, वो ही सबका मोटिवेशन है. आप सोचे कि एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करूंगा, कंज्यूमर को एक कन्वीनियंस दूंगा और एक सोल्यूशन लेके आऊंगा. ये सब आपको हकीकत में देखना है ना, जो यूजर्स रहते हैं ना, वो देखने के पैशनेट है. लाइक irrespective of failures, irrespective not having money, irrespective of tough competition, still you want to work and be an entrepreneur. That is the motivation behind this. Next. And it all starts with an idea. Next. It all starts about, it's all about an idea, right? आपको जो दिमाग में एक आइडिया आता है उससे स्टार्ट होता है. बट व्हाट इज अ गुड आइडिया? There's nothing like a bad idea. There's nothing like a good idea. Idea is what makes a difference. Is next. It's all about आइडियाज और डायमंड डजन. ऐसा नहीं है कि आपने जो सोचा वो वेरी यूनिक एंड इनोवेटिव है. नहीं. आइडियाज नो, इट कैन नेवर बी यूनिक बिकॉज आइडिया इज वेरी इंटेंजिबल, इट हैज नो वैल्यू. नेक्स्ट. So it's 99% is the execution and belief and 1% is only idea. So next time आप बोले कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, मैं उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसका जो वैल्यू नहीं है. जब वो आइडिया को आप थोड़ा एग्जीक्यूट करके थोड़ा वैलिडेशन मोड में लेके आके एक MVP स्टेज में लेके जाके दिखाएंगे ना, तब उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा. सो बिलीफ एंड एग्जीक्यूशन इज 99% एंड 1% इज एन आइडिया. सो आइडियाज आर नॉट वर्थ अनटिल अनलेस दे आर एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट. तो नेक्स्ट टाइम आप कोई जस्ट आइडिया लेके इंक्यूबेटर कोई इन्वेस्टर के पास मत जाइएगा. यू डोंट वेस्ट योर टाइम. Go with some kind of metrics, go with some kind of validation, go with some kind of prototype or some customers. Then it has something to talk about. Yeah. Next. So 90% of startups fail. Why they fail is I'll give you an explanation. Because it's very important. आप beginning stage पे, आप जो शुरुआत में कर रहे हैं ना, जो incubator stage पे, early stage में, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई startups fail. अगर आप सेम फेलियर का जो लर्निंग्स आपका करंट जर्नी में इंप्लीमेंट करेंगे, आप वो मिटिगेट कर सकते हैं. यू वोंट डू द सेम मिस्टेक्स. नेक्स्ट. सो कितने लोग के कंपनी पता है? लीडो बोल के एक एडटेक कंपनी था. ईयर बिगनिंग में दे रेज $10 million फंडिंग फ्रॉम वेरी मार्केट इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट. एंड they raised 10 million funding from a market investors like Roni Screwvala and very big guys. But what happened? They have to go back. They have to shut the shop. After raising 10 million funding, after 1 month, they announced, you go online and search Lido startup, they say like it's a failure. And the reason why they failed, simple, because they overpromise customers. वो बोले कि आप हमारे प्रोडक्ट 1 महीने के लिए यूज करिएगा पे करके, अगर पसंद नहीं आए तो रिफंड इज गिवन. So काफी कस्टमर्स ले चुके हैं. एंड इफ यू नो द इंडियन कस्टमर माइंडसेट, दे ऑलवेज वांट टू वेट अंटिल द लास्ट डे. वो रिमाइंडर लगा के भी रिमाइंड करता है कि मेरे को प्रोडक्ट पसंद नहीं आए, पैसे वापस कर दो. So 29 days they'll use it full, and 38th day they will say that I didn't like it, refund. Company has failed by putting this policy of refund policy, by which even though raise money, they failed. It was all use complaints. They have to process refunds, which was not possible for them. And at last, the only option was they have to shut down the company. So leaders become a failure story. So many employees, close to around 600-700 employees, had to lay off. इतना बड़ा फेलियर स्टोरी हो गया. नेक्स्ट. कॉइनेक्स बोल के एक क्रिप्टो एक्सचेंज भी आया था 2 साल पहले. जब वो मार्केट में आया था, काफी जबरदस्त ट्रैक्शन बनाया, हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ फंडिंग उठाया, वैल्यूएशन भी $1 billion हो गया था, काफी हो गया था. व्हाई इट हैज टू फेल?
because overnight RBI ने एक notice issue किया कि crypto platforms cannot operate in India on certain guidelines. So all crypto exchanges had to collapse, and Coinex is one of the big story because they raised a lot of money in the collapse. The reason here why they collapsed because they didn't anticipate the regulatory considerations. Like they didn't take in RBI's guidelines into consideration. They went ahead, and when the RBI realized that these people are doing really big and without having proper regulatory things, and they released the notice, and this company had to shut down. They can't do anything, right? Third one, next. शटल बोल के भी एक वेरी सक्सेसफुल कंपनी था, अमेजोन में भी इन्वेस्ट किया है कंपनी में और काफी 20 मिलियन तक फंड रेज हुआ था. शटल दिल्ली एंड बैंगलोर और हैदराबाद और काफी सिटीज में पॉपुलर हो गया था. दिस इज मोर लाइक ए लास्ट माइल कनेक्टिविटी का बस था. सडनली क्या हो गया, दे डिडंट प्लान फॉर द अनसर्टेनिटीज. कोविड के टाइम में कोई ऑफिस नहीं जा रहे थे, पूरा ट्रांसपोर्ट ही बंद था. दे हैव टू शट डाउन आफ्टर रेजिंग सो मच ऑफ मनी, नो बिजनेस. So all three cases में first Lido raised money, but they didn't considered customers' behavior and mindset. Over promise they did, and they failed, thinking that customers will continue, but that didn't happen. Customers something different. They asked for refunds. So the business model they over promised and they lost it. Second case में didn't consider the government regulations. They ignored the government and the law, and they failed. Third one was not prepared for the uncertainties, future. So they couldn't pivot. They didn't have a plan B, and they had to fail. So all the three cases, most of the time when we're in early, we try to do all kind of promises, all kinds of marketing gimmicks to attract customers, and we don't even forecast कल क्या होने वाला है. आप सोचते हैं कि आज के दिन, आप कल का नहीं सोचते कि अगर मैं बड़ा हो गया तो what all challenges I'll come across. कोई सोचते नहीं है. But if you start doing that, then you see what all you can mitigate. Tomorrow you think like your customer is very notorious, he will not pay you. Then you have to change your policy, payment policies, payment terms. And if you think like next year अगर और एक कुछ recession आ गया, कुछ black swan event हो गया, how do you prepare that? Do you have a plan B? अगर नहीं है तो plan करना पड़ेगा आपको, right? So you should be prepared about the future. You should be prepared and well known about your industry, your competitors and your customers, and that's where you can avoid a lot of failures. Next. So 90% again startups face challenges for these common reasons. This has been researched with my 8 years of experience. अगर 30-40 companies invest करे, काफी companies क्यों fail हो गया बोल तो very common reasons. The first and most important thing is product market fit issues. आप जो product बनाया है वो market में उसका acceptance नहीं है, adaptation नहीं है. A lot of founders don't realize that the product market fit is an issue. Still they will raise money, still they will put money, they will keep going. आपको ये ध्यान लगाना है कि अगर product market fit नहीं हो रहा है, आपको इमीडिएटली पाइवट करना है, नहीं तो बंद करके कुछ और स्टार्ट करना है. लेकिन इसको पकड़ के आपको काफी दूर जाना ही नहीं है. दैट्स व्हाई इसे फेल फास्ट एंड फेल सेफ. मैं बताता हूँ कि प्रोडक्ट मार्केट फिट का टेस्ट कैसे करना है नेक्स्ट स्लाइड में. लेकिन सेकंड पॉइंटर इज गो बैक, सिग्निफिकेंट फंड रेज फैटिग. फंड रेजिंग इज नॉट एन इजी टास्क. आप समझिए कि इतने सारे इन्वेस्टर से, इतने सारे वीसी से ऐसा नहीं है कि फंडिंग इजी हो जाएगा. आज देखे तो हिंदुस्तान में क्लोज टू अराउंड 50,000 60,000 स्टार्टअप्स है who are certified by the DIPP and all, और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सर्टिफाइड स्टार्टअप से लीजिए. लेकिन अगर फंडिंग का सिचुएशन देखे ना, इट्स लेस देन लाइक आई शुड से अराउंड 5 to less than 10% फंडिंग ओनली हो रहा है. दैट मीन्स व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी एंड चांसेस, आप ही समझिएगा. What kind of companies get funded? 95% of startups are not getting funded, though there's so much of money is floating around. Reason is again not having the right business plan, not having the right product market fit, right? Okay. Third point is cutthroat competition. If you are not aware about your competition, if you are not knowing about competitor analysis, you will fail sometimes. So fourth point is talent hiring becoming expensive. आज देखे तो talent का cost काफी expensive हो चुका है, तो इसलिए भी काफी companies are unable to afford them और burn rate बढ़ जा रहा है, and they are failing. Fourth is market uncertainty. हम already last 2 years देख चुके हैं कि market uncertainty का impact कैसा होता है. Not preparing for that. And one more most common thing it has been coming to the limelight is co-founder disharmony. बोलते like अगर आप single founder है, नहीं तो 2-3 founders से काफी टाइम ये founders के बीच में एक difference of opinion आ जाता है. आप एक दिशा में जाते हैं, उनको दूसरी दिशा में जाना है.
So how do you bring the same page और सब कुछ? So these are the 6 common. इससे ज़्यादा और भी है, लेकिन these are the most common reasons why companies fail. अगर you are in part of something, any of this, you should immediately correct yourself, and you have to work towards rectifying it. Next. And I'll say, like, failure is not bad. Failure is like it's first attempt in learning. आप उसको positive note में लेना है. And fail will teach you a lot of things. अगर एक स्टार्टअप फेल हो गया तो कोई बात नहीं, आपको दूसरा स्टार्टअप में अच्छे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव सर्टेन लर्निंग्स. इफ मोस्ट ऑफ योर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स, देन आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये सब मेजरमेंट्स लेना पड़ेगा कि भाई वी शुडंट डू द मिस्टेक्स व्हाट अदर्स हैव डन. नेक्स्ट. So this is a very powerful tool. I strongly recommend a lot of people to use this tool, business model canvas. अगर कोई यूज करे तो अच्छा है, अगर नहीं यूज करे तो इमिडिएटली आपको आई रिकमेंड दैट वीकेंड बैठ के आपका बिजनेस मॉडल पूरा कैनवस में लगा के देख लीजिए. दिस विल टेल यू वेदर यू हैव द प्रोडक्ट मार्केट फिट. दिस विल टेल यू अबाउट योर कस्टमर बिहेवियर. दिस विल टेल यू अबाउट व्हाट शुड बी द प्राइसिंग. दिस विल टेल यू अबाउट हाउ यू शुड channelize your overall sales and everything. इट्स ए 1 hour एक्सरसाइज होगा, आपको इतना इंफॉर्मेशन देगा आपका बिजनेस के बारे में. आप आइडिया स्टेज में रहें दो, अर्ली स्टेज में रहें दो, ग्रोथ स्टेज में रहें दीजिए. आप बिजनेस मॉडल कैनवस वेरी वेरी रेगुलरली करना पड़ेगा. दिस विल गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स अबाउट योर बिजनेस, एंड जो इनसाइट्स आएंगे उसके हिसाब से you can change your business model, pivot your business model. Sometimes you can also shut down what you're doing. You need not even work on this, right? Next. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. काफी बार क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, इवन इट कुड बी वेबसाइट, इवन इट कुड बी अ सिंपल वेब एप्लीकेशन, lot of people spend too much on website, too many pages, too much of product features. But practically आप सोचिए कि 80% of users use 20% of features. अगर हम भी जो यूजर ना, even you are a user, you give a feedback using a product, कितना यूज कर पाएंगे आप? 20% से ज्यादा यूज नहीं करते. So when you know this mantra, you directly build only the 20% of features. अगर एक वेबसाइट पे आप बना रहे कि एक 10-20 पेजेस बनाना चाहिए, जरूरत नहीं है. आपको जो कस्टमर आएगा, जहाँ पे कन्वर्शन होगा, वही पेज पे फोकस कर दीजिए. वहीं पे कंटेंट, वहीं पे कॉल टू एक्शन कर दीजिए. अगर जो फीचर्स काम का नहीं हो तो किल दैट फीचर. अगर आप वेबसाइट आपका वेबसाइट है, उसको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा आपको. गूगल एनालिटिक्स और ट्रैकर जो रहता है, विजेट्स यूज करके ट्रैक हाउ मच टाइम पीपल आर स्पेंडिंग ऑन हाउ मेनी पेजेस. कोई पेजेस पे कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, कोई यूजर स्पेंड ही नहीं कर रहा, बोलते रिमूव दैट पेज. देयर इज नो पॉइंट हैविंग दैट पेज. एंड रेगुलरली कीप चेंजिंग योर कंटेंट. कौन सा कंटेंट पे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके हिसाब से आपको भी लेना पड़ेगा. नेक्स्ट. सो इट्स ऑल अबाउट कस्टमर्स. अगर आप कस्टमर पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. फॉरगेट एवरीथिंग, बिकॉज योर एंटायर स्टार्टअप, योर प्रोडक्ट, योर सर्विस इज ओनली एक्सेप्टेड बाय कस्टमर. अगर कस्टमर को पसंद नहीं आए तो निकल जाएगा. द बेस्ट वे टू वैलिडेट इज, आप पहले थोड़े कस्टमर्स को फ्री में दीजिएगा, स्मॉल सैंपल साइज, एंड इतना फीडबैक लीजिए कि आप उनसे पूछिए कि उनको आपके प्रोडक्ट या सर्विस में क्या पसंद है, क्या चेंजेस करना पड़ेगा, क्या पसंद नहीं है. उसके हिसाब से आपको पूरा चेंज करना. कस्टमर्स आर योर बेस्ट टीचर्स. दे विल टीच यू हाउ टू रन ए बिजनेस. सो अगर शुरुआत में है तो ट्राई टू फॉर्म ए व्हाट्सएप ग्रुप विद कस्टमर्स, और रेगुलरली कीप टॉकिंग टू योर कस्टमर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, व्हाई आर दे नॉट यूजिंग इट, एंड देन दैट विल चेंज. एंटायर विल गिव यू a very good insight about what kind of changes you need to make your entire business model. एक ही बोलता हूँ कि गेट ऑब्सेस्ड विद कस्टमर्स, नॉट कॉम्पिटिटर्स. कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी लीजिए, लेकिन कॉम्पिटिटर्स के बारे में ज्यादा उतना फोकस ना करिएगा. क्योंकि अगर एक कॉम्पिटिटर ने नया फीचर लॉन्च किया, कोई प्राइसिंग कम कर, तो आपको उसको डरने की जरूरत नहीं है. आप खाली कस्टमर सपोर्ट में फोकस कर दीजिए, बस. दैट विल चेंज योर एंटायर थिंग. Lido, what they have done, they have given new features, new discounts, but they didn't focus on customer behavior. You know what's the story? Company has shut down. Next. This is very important. आपको जो भी टीम है ना, सॉलिड टीम को हायर करना पड़ेगा. काफी टाइम क्या होता है शुरुआत में, इनिशियल डेज में, यू मे नॉट हैव बिग बजट्स टू हायर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज, बट स्टिल आप क्या कर सकते हैं? यू नीड टू आइडेंटिफाई ए पीपल हु विल बी द आइडियल फिट फॉर योर स्टार्टअप. टॉक टू देम, सेइंग दैट, सेल योर विजन टू देम. आपको बताएगा कि अगर एक कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है, अगर वो आदमी और इंसान आपके स्टार्टअप में ज्वाइन हो गया, तो
टुगेदर क्या अचीव कर सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कॉम्प्लीमेंटिंग स्किल्स है. सो इतना सेलिंग करना पड़ेगा आपको कोई पोटेंशियल रिसोर्स को. एंड इफ यूर सिंगल फाउंडर, आई ऑलवेज रिकमेंड ट्राई टू फाइंड ए को फाउंडर, क्योंकि सिंगल फाउंडर आपको काफी लिमिटेशंस रहते हैं. अर्ली स्टेज में काफी कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ फेज में जाएंगे ना काफी मुश्किल हो जाएगा. स्पेशली इफ यू वांट टू रेज मनी, सिंगल फाउंडर कैन नॉट रेज मनी एंड रन द बिजनेस. एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज फंड रेजिंग इटसेल्फ इज एन एक्टिविटी, वो काफी टाइम लेगा आपका. सो आप एक को फाउंडर ढूंढिएगा. अगर को फाउंडर है तो डिवाइड द रोल्स, कौन क्या करने वाला है. इट्स नॉट इंटरफियर इन ईच अदर्स रोल्स एंड एक्टिविटीज. ट्राई टू फोकस ऑन द ग्रोथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट. Yeah. So today India is the fastest growing startup ecosystem. आपको काफी अपॉर्चुनिटी है अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ग्रो करने के लिए. एंड टुडे सिटिंग इन अ स्मॉल टाउन आल्सो यू कैन बिल्ड ग्रेट प्रोडक्ट्स. पहले ऐसा है कि आपको बैंगलोर आना पड़ेगा, गुड़गांव जाना पड़ेगा, हैदराबाद. लेकिन आज वैसा नहीं है. यू फाइंड गुड टैलेंट आपको रिमोट में मिल रहा है. यू कैन गेट कस्टमर्स फ्रॉम अक्रॉस ऑनलाइन वर्चुअली. तो स्केल का कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 साल पहले प्रॉब्लम था कि हम रिकमेंड करते थे कि आप बनारस से आप बैंगलोर आ जाइए, हैदराबाद आ जाइए, आप टीम सेट करें, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बिकॉज द कॉस्ट अर्लियर. बट टुडे आप बनारस में और कोई टाउन में, यूपी में भी बैठ के भी आप कर सकते हैं. एक अच्छा स्टार्टअप बना सकते हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी बना सकते हैं आप. क्योंकि टुडे द कनेक्टिविटी इज वेरी गुड एवरीवेयर. नेटवर्क इफेक्ट है, वायरलिटी क्वोशंट इज इजी. आप अच्छा एक वीडियो बना के व्हाट्सएप में दे दिया तो प्रोडक्ट में वायरल भी हो सकता है. हो रहा है आजकल, देखे तो काफी एग्जांपल्स है देने के लिए. एंड रिसोर्स भी आराम से मिल रहा है आपको. कोई टीम सस्ते में होना है तो भी कोई दूसरे स्टेट से लेके आ सकते हैं आप, जो आपके बजट में सूट हो. लेकिन आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा टू रन द बिजनेस वर्चुअली, टू रन रिमोट टीम्स. आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोसेस बनाना पड़ेगा. स्ट्रॉन्ग प्रोसेस बन चुका ना, सेट हो जाएगा ना, तब आपको सब इजी हो जाएगा. तो ये सब कुछ लर्निंग्स अगर आपने आपके स्टेज पे, जो स्टेज में आप है अभी, ये पूरा लर्निंग्स आपको इम्प्लीमेंट कर दे तो अडॉप्ट कर देंगे ना, यू विल मिटिगेट लॉट ऑफ फेलियर्स, यू विल मिटिगेट लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स. आप खाली वो ग्रोथ और टीम पे भी फोकस ज्यादा कर सकते हैं. So this is a presentation about me. What startups should learn in their doing this. So एक आप शार्क टैंक चेक देख चुके हैं काफी लोग, काफी इंस्पिरेशन भी आ चुके होंगे शायद. मैं ये बोलता हूँ कि अगर don't do a startup for sake of doing. If you really want to give your 100%, you really want to make a difference, then only you get into that. Because startup journey is not an easy journey. It's very, very tough. It's going to take a lot of energy. It is going to take a toll on your personal life, professional life. काफी कुछ होने वाला है. Yeah, this is about presentation. Now any questions? Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Dr. Piyush Gupta, and I'm from the office of Dr. Manish Arora. He will be leaving now. So Okay. he will moderate this session. So I would like to request all the participants, if you have any question related with funding a startup, you can ask. Aditi, Aishwarya, Amrit, Archana, Arushi, Dikshika, Gitanjali. Are you listening me? एक दो लोग आपका स्टार्टअप को भी इंट्रोड्यूस करिएगा, so that easy for me to understand आप क्या कर रहे हैं. Maybe 3-4 people can just introduce your startups quickly. Actually, sir, these are the students. Okay, and I think all the students are not having any kind of a startup practice, but they are learning about the startup and entrepreneurship of their future plan if they intend to. So, Vivek, Sumit, Saurabh, are you hearing me? Yes, sir. Do you have any question? आप काफी लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स sir. हैं, MBA के या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं आप लोग? Are the mixed? Someone is Mixed from students. management, someone is from science, someone is from social science. Very good.
तो अगर आपको entrepreneurship पे काफी इंटरेस्ट रहे तो my recommendation would be like you people join startups as an employees. शुरू दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि अभी फाइनल ईयर में है तो काफी स्टार्टअप्स में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगा. अप्लाई फॉर इंटर्नशिप 3 months to 6 months, लर्न एवरीथिंग, सो आपका रिस्क भी कम रहेगा. देन आपको समझ में आएगा कि अगर आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है नहीं जाना है. एंड स्टार्टअप में जो आप सीखते हैं ना, दैट विल आल्सो हेल्प यू टू गेट बेटर जॉब. अगर आपको जॉब मार्केट में जाना है तो आप एक स्टार्टअप में 6 महीने 1 साल काम करके अप्लाई कर देना, आपको काफी रिस्पॉन्स आएगा. क्योंकि आज काफी कंपनीज मेरे को भी अप्रोच करते हैं कि आपका स्टार्टअप्स में कोई एम्प्लॉयज वांट टू जॉइन ए बिगर कंपनीज, वी आर हैप्पी टू हायर देम. आई एम पेइंग वेरी गुड पे बैक ऑल्सो. क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, एक असलिंग नेचर आ जाता है, इनोवेटिव माइंडसेट आ जाता है, फ्रूगलनेस आता है काम करने के तरीके में. ये सब कुछ कोई कॉर्पोरेट और बड़े कंपनीज में सिखाना सीखना काफी मुश्किल हो जाता है. वहां पे क्या होता है, एक टीम लीडर होता है, एक मैनेजर होगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा, एक प्रोसेस रहता है. वहां पर भी अच्छे है, लेकिन स्टार्टअप में और कुछ वैल्यू अलग है. आप इंडिपेंडेंटली इतना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, आपको आइडिएशन को वैल्यू मिलता है, आप जो सोचे तो वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे. वहां पे इतना स्किलफुल हो जाएंगे आप 1 साल में, जितना नॉर्मली कंपनी में जाए तो 5 साल लग जाता है. एंड वो स्टार्टअप में काम करके अगर नहीं चल रहा है तो एनी टाइम यू कैन गेट ए जॉब. आज लॉट ऑफ कंपनीज आर encouraging टू हायर पीपल फ्रॉम स्टार्टअप्स बिकॉज ऑल दिस एट्रीब्यूट्स. ये कैरेक्टरिस्टिक जो स्टार्टअप सिखाते हैं ना, कहीं नहीं सिखा सकता है. अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड, डोंट गो बिहाइंड आई पे पैक एज अ कैंपस इंटरव्यू. जस्ट अ रिकमेंडेशन, माय ओपिनियन. Don't go behind the jobs. First work with a startup with a low pay, and then you go to any company, they'll pay you more than what they offer you in a campus hiring. Trust me, that's happening today. And people who worked in my company also, they joined companies like Glassdoor with a very high pay pack. And they've also been respected, and they also learned so much in the company. After going there, they become the top performers. This could be another thing. Okay. Anyone else? Anyone else? You can also put message in chat box. Okay, Sanjay sir. I think Yeah, कोई they पूछे are थे there. यहाँ पे. I think some questions have come here. I make science Yeah. shows means live experiments among college school students. I want to scale up. I need your guidance. Now the working mode और शो के लिए 30 to 50,000 मिल जाता है, but scale. तो इसके लिए आपको, if you are doing just as a service, you try to bring it as a product. आप एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक कंपनी था, वो लोग क्या बोले, दे मेड ए पोर्टेबल लैब. काफी स्मॉल टाउन्स में स्कूल्स डोंट हैव देयर ओन लैब्स, आपको भी पता होगा इसलिए आप जा रहे हैं. एक पोर्टेबल लैब बना दीजिए, एक डिजाइन करके बॉक्स में भर के, मेक इट ए साइंस लैब, फिजिक्स लैब ऐसे बना के. उसको अच्छा पेटेंट भी करा सकते हैं अगर ऐसा हो गया तो, करके आप स्कूल्स को भेज दीजिए. नहीं तो स्कूल्स को फ्री में दीजिए फर्स्ट डिवाइस, एंड यू कैन स्टार्ट सेलिंग देम द मटेरियल. जो भी केमिकल्स रहते हैं, जो भी डिवाइसेस रहते हैं, कर सकते हैं. लॉट ऑफ स्कूल्स विल बी इंटरेस्टेड टू बाय दैट पोर्टेबल लैब्स. इवन गवर्नमेंट स्कूल्स विल बी इंटरेस्टेड टू बाय देम. आप ऐसा कर सकते हो. दैट कैन बी अ गुड स्केलेबल मॉडल आल्सो. ऐसा कोई बन गया तो इवन इन्वेस्टर्स विल बी इंटरेस्टेड टू फंड देम, बिकॉज नाउ स्कूल्स भी रीओपन हो गए. दे आल्सो वांट टू सेट अप द इंफ्रास्ट्रक्चर. एक पोर्टेबल लैब बना दीजिए, साइंस लैब बना के आप कर सकते हैं. Second question, how important is customer service for companies when they launch their products? There are a lot of bad reviews on Play Store as well as open complaints on Twitter, other social media. You may have faced similar problems in Ola Cabs or Zomato orders. How to solve this as a startup? Yes, because customer support is very important. If you take Amazon as a company, Amazon is the world's #1 customer-centric company. And they work around customers, and that's why they don't worry about competition and they are in the thing. And मैं एक एग्जांपल देता हूँ. We invested in a company, in a Delhi company which is into healthy snacks. evolvesnacks.com is a company name, चेक कर लीजिए. हमको शुरुआत में काफी नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव कमेंट्स फेसबुक पे आके, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, पैकेजिंग अच्छा नहीं है बोल के पूरा लिखते हैं. वो अपने कंट्रोल में नहीं है. जो कस्टमर को जो पसंद आया, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो लिखेगा. तो हमने क्या किया, उसके लिए सोल्यूशन है कि यू इग्नोर इट और यू एड्रेस इट. वी डिडंट वांट टू इग्नोर इट. तो हमने क्या करें, वी वेंट टू, वी रीच्ड आउट टू एवरी कस्टमर. वी टुक दैट 15 customers who have written negative reviews in various sources. We formed a WhatsApp group.
We send them few samples and tell them, please try this now. And we ask them to give the feedback. Now this bad customers became, critical customers became our reviewers. Before we launch a new product, we used to send them a sample, they used to do it. Later, what happened, these customers started making videos themselves and start uploading. Slowly, now today we became a 99% positive review company. It takes time, लेकिन आपको very personally handle करना पड़ेगा. Customer success is very very important. आपको वही करना पड़ेगा कि Play Store में कुछ हो गया तो reach out to the customer, talk to him, understand what are the problems and can you address it. वो solve होने के बाद ask him to again either remove the review or ask him to give a positive review. And वो काफी लोग करेंगे वैसा. उसमें challenge नहीं है. Yeah. Any other questions? और कुछ पूछना है? अच्छा, इसमें how can I meet you for detailed information related scaling, building good? तो मेरा ईमेल आईडी दे रहा हूँ, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं और मेरे को आई एम एक्टिव ऑन लिंक्डइन. काफी लोग मेरे को लिंक्डइन में भी चैट करते हैं, उसमें भी कर सकते हैं. Okay. Anyone else? If you have any question, please shoot. Yeah, reach me if you have any pitch decks you want feedback also. I'm happy to do on the weekends. मेरे को भेज दीजिए. I can review and give you some comments on your pitch decks also. So I think no one is left with questions, so we should end up this session. So first of all, I would like to request to all the participants to fill the form that the link has been given to you in the chat box. That is actually very necessary part to obtain the certificate. Okay. So I would like to thanks to Sri Sanjay and Shetty ji for his amazing words and discussion. Was really interactive and informative. And I would like to take this opportunity to thank you on the behalf of Dr. Manish Arora and entire Council of Institution Innovation Council, Banaras Hill University. And it is a part of Ministry of Education's Innovation Cell. So I hope we will look forward to doing some more activities with you in the future. At the Definitely. At the end, I would like to thank you from my bottom of heart. Thank you so much. My pleasure. One last thing, and one last thing, because a lot of students are there. If anyone of you want to do internship with startups also, you can send your profiles. I can refer to my portfolio companies. They always keep hiring interns who want to join from the final year, and that can be considered. Okay, Sanjay sir, some students are there. They are actually willing to do some job with startups in creative field. So I will share their portfolio. If that is relevant, then you can look at. Sure. Done. So, dear participants, I also thank you to you all for participating in. Thank you so much. Have a good day. Thank you very much. Good luck to you all.